Hello everyone. I am Pranali, host of today's session. Good evening everyone. मैं प्रणाली हूँ आज के सेशन की होस्ट. तो आज हम क्या सीखने वाले? लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द टुडेज मॉड्यूल. ओके, कोर्स या फिर मास्टर क्लास का नाम है मिडिल ईस्टर्न फलाफल मेकिंग मास्टर क्लास. Okay, so before that, let me just give you a few instructions as well. That session will be bilingual. That it means it will be conducted in both languages, so that language will not be a barrier for all of you to understand the session. राइट, हमारे सेशन जो होते हैं सारे सेशंस पंखुरी के दोनों भाषाओं में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, साथ ही में इंग्लिश में भी होते हैं. क्यों? ताकि आपके लिए बैरियर ना बने भाषा जी. और रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको मिलेगी. मास्टर क्लास नोट्स भी मिलने वाले हैं पंखुरी एप्लीकेशन में. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द हैशटैग ऑफ अवर ट्रेनर जो कि कुक विद कमल अपनी पंखुरी प्रोफाइल पर अपलोड कीजिए. सो लेट्स सी व्हाट इज इन टुडेस मॉड्यूल. आज के मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले जानते हैं. सो ओके, मिडिल ईस्टर्न फलाफल नाम सुना होगा, देखा भी होगा, खाया भी होगा. बनाते कैसे स्टेप बाय स्टेप आज हमारे ट्रेनर कमल हमें बताने वाले. सो या प्रिपेयर दिस यमी फलाफल बैटर प्रिपेयर करने वाले विद एडिंग द सीक्रेट इंग्रेडिएंट. ओके, कुछ रेसिपीज में होता है बोलते कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो आज के हमारे रेसिपी में भी है. देखते वो क्या है, बने रहिए. सो ओके, फ्राइंग इन एयर फ्राइंग भी करेंगे. टू क्यों करने वाले हैं? यस, तो फ्राइंग करेंगे एयर फ्राइंग टू मेक इट सॉफ्ट and melt in mouth. Okay, खाते ही मुंह में पिघल जाए, ऐसा ये होने वाला है. So we all are very excited for today's session. Yes, let's go. And I request our trainer to please take over the session. Thank you so much, Pranali, for the introduction. And today we are going to make Middle Eastern falafels. आज हम Middle Eastern falafels बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले जैसा प्रणाली ने बताया, हम इसका बैटर या डो जो भी रिक्वायर्ड है वो बनाएंगे. So first of all, we are going to make the base, the batter, the dough type of thing for the falafel. So let's begin with that. So for this, I am taking a mixer here. Please shift the spotlight, Pranali. Please turn on the second camera. I'm sorry. Just a second. Let me do it in landscape mode. Okay. Okay. Can you shift it now, Pranali? It is not on yet. The camera is not on yet. Yes, now it is. So we are going to take 1 cup of white chana, which is semi-boiled, not completely boiled. So you can see if I press it, it's not soft. So it's semi-boiled. Or you can just soak it overnight. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने व्हाइट चने लिए हैं. या तो आप इनको ओवरनाइट सोक करके रख सकते हो या तो सेमी बॉईल कर सकते हो. Secondly, we are going to add onions, which is roughly chopped. We are going to add cloves of garlic. So I'm using 3 cloves here. So हमने इसमें व्हाइट चने डाले हैं, अनियंस डाले हैं जो कि रफली चॉप थे, और हमने 3 लहसुन की कलियां डाली हैं इसमें. So I will add salt as per taste. If you require salt later on, you can do that later on also as per taste. Baking soda, which is half TSP. We have a question. If we soak it overnight, we don't have to boil them? No, either one of the things you have to do.
दोनों में से आपको एक ही चीज करनी है, या ओवरनाइट सोक करना है या सेमी बॉईल करना है. ओके, नाउ क्यूमिन, जीरा जिसे कहते हैं हम, 1/4 TBSP. And now we have to add coriander and parsley. So if you don't have parsley, just add coriander. That is totally fine. But if you can get parsley, add parsley. Parsley gives a very nice flavor. So I'm adding coriander here, just roughly chopped. This is washed. We will close the lid and blend it. So as you were seeing, I was collecting all the ingredients in a mixie bowl. So you don't need to do it in a bowl first and then shift it to the mixie bowl. So you can directly take all the ingredients in a mixie bowl. So जैसा आपने देखा, मैं मिक्सी के बोल में ही सारे इंग्रेडिएंट्स ले रही थी, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आपको एक बोल में करना है और फिर बाद में एक मिक्सी बोल में करना है. डायरेक्टली मिक्सी के जार में कर लीजिए. And we are going to blend it. Okay, so while grinding, if it is required, then you can add the water which was there when we boiled the chanas. So अगर आप चाहते हो थोड़ा सा पानी ऐड करना, अगर ब्लेंड नहीं हो रहा इजीली, तो आप थोड़ा सा ये पानी ऐड कर सकते हो जो चने बॉईल करते टाइम हमें मिला था. और अगर आपने ओवरनाइट सोक करे हैं तो आप नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हो. So using a spatula or knife, can you shift the spotlight, Pranali? I think that would be easy to see what's happening in the jar. Just a second, I'll settle it a little. ओके, तो बहुत स्लोली और स्टेडीली आपको इसको मिक्स करना है. बहुत जल्दी नहीं होगा, बट पानी डालने की भी जल्दी नहीं करनी है. So you have to keep pressing it and it will happen slowly and steadily, not at one go. So you have to be patient with patience. You have to show your patience with this, and you don't have to add water very quickly, only when it is required. So I'm going to add some more water now.
adding some more water. So after this, I will not add any water, just I will mix it and grind it. If it stops, mix it again and grind. तो अब मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड करूंगी, जस्ट मिक्स करती जाऊंगी और ब्लेंड करती जाऊंगी. ओके. Okay, so this is done. Let's keep this aside. We need one more very important thing because we added water, which generally doesn't go in falafel, but to make the process easy, because in restaurant their processors are quite fast, they have heavy watts and heavy blades, so it can be done without water, but in home mixer it's not quite possible, so that's why we have used water. But then it makes it is difficult to form it into patties, so what we have to do it now. So यहाँ पे हमने क्या किया है, पानी डाला है जो कि जनरली रेस्टोरेंट में नहीं डलता, क्योंकि जो उनके फूड प्रोसेसर होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, उनकी ब्लेड शार्प होती है, हैवी होते हैं, तो उनमें विदाउट वाटर ब्लेंडिंग हो जाती है. बट यहाँ पे हमने पानी ऐड किया है उस प्रोसेस को इजी करने के लिए, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए भी हमें कुछ डालना है. That is the secret ingredient which we are going to use, which you all also must be using for many of your patties or tikkis, which is breadcrumbs. So we are going to make some breadcrumbs here. तो हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स कर रहे हैं 2 ब्रेड्स के, जो कि हम बैलेंस आउट करने के लिए डालेंगे. जो हमने पानी इसमें डाला है उसके वजह से थोड़ा लिक्विड हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे. And you need to use very fine breadcrumbs. So आपको बहुत fine breadcrumbs use करने हैं. Any questions we have? Yeah, they were having questions regarding like where we will be getting notes and the recording. It will be available in the Pankhuri application itself. आपके notes and recording Pankhuri application में available है. Can we shift the spotlight on the counter? Sure. We have a question. Can we use market-made breadcrumbs? Yes, you can. कुछ पार्टिसिपेंट्स ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. अभी तक हमने क्या किया है, हमने मिक्सर में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, सिर्फ ब्रेड्स को छोड़ के, ब्रेड क्रम्ब को छोड़ के, और हमने उसको मिक्स कर दिया है. और वाटर हमने डाला है 2-3 पॉइंट्स पे जहाँ पे हमें जरूरत थी. बहुत ज्यादा वाटर ऐड नहीं करना है.
So you don't have to add much of water. And all the ingredients we have mixed in a blender and blended it with help of water. So in this, I am going to add breadcrumbs. Gradually, I will add, not all at once. Any substitute for breadcrumbs? Just a second. Any substitute for? Breadcrumbs. No, not in this recipe. So I'm taking out a small amount. Just avoid the water, then you can avoid the breadcrumbs also. Is it coarsely grind? Yes. आप अगर पानी नहीं डालेंगे पहले तो आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट बिना पानी के थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना. Sir, this camera is not in landscape mode. Okay, just a second, I will do it. Is it now? Yes. So this is ready, the falafel dough or batter, whatever you would say it. So यहाँ पे जो falafel का बेस है वो हमारा रेडी हो गया है. ओके, कंसिस्टेंसी आप एक बार देख लो. सॉफ्ट होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि वो शेप ले ले. Can you see it is taking the shape? Now we will keep the oil so that it gets hot and then we will fry the falafels. I'm using electric kadhai here. So I'm going to keep the flame approximately 3 or 4. So that is medium to high. You can deep fry this also. You can shallow fry this also. That depends on you. So आप इसको deep fry भी कर सकते हैं, shallow fry भी कर सकते हैं, वो आप पे depend करता है. Yes, Pranali, do we have any questions till the time the oil is getting hot? No questions. Okay, one question. Ma'am, कैसे पता चलेगा कि bread crumbs की जरूरत नहीं है? आपके जब शेप होल्ड कर लेना, सॉफ्ट होना चाहिए और शेप होल्ड करना चाहिए.
अब ये वाला देखो, मैंने जो थोड़ा सा सेपरेट रखा था, ये शेप होल्ड नहीं कर रहा, देख रहे हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वेयर एज दिस इज सॉफ्ट बट दिस इज होल्डिंग अ शेप नाइसली। ऐसे पता लगेगा कि आपको ब्रेड क्रम्स और चाहिए कि नहीं चाहिए। सॉफ्ट होना चाहिए। You have to take care that it needs to be soft. It should not be hard. If you add more of breadcrumbs, then it will get hard. Soft, and it should hold the shape. And if it is very soft and not holding the shape, add few more breadcrumbs. If it is hard, that means you have added a lot of breadcrumbs. Am I clear? Yes. प्लीज रिप्लाई पार्टिसिपेंट्स। एंड गैस की फ्लेम जो है वो हाई होनी चाहिए या फिर लो? Medium to high. अभी हमने मीडियम टू हाई रखी है, जब मैं फ्राई करूंगी तब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अभी ऑयल गर्म हो रहा है बिकॉज द ऑयल इज गेटिंग हॉट, सो इट्स फ्रॉम मीडियम टू हाई, बट वंस आई विल स्टार्ट फ्राइंग दिस, द फ्लेम नीड्स टू बी ऑन मीडियम। Also, instead of making them in ball shape, can we flatten them a little and that would be easier to shallow The fry? shape, yes, that the shape, it all depends on you, however you want to shape it. There is no such specification that you have to shape it in a ball or a flattened thing. So you can do it like the way you like it. तो आप किसी तरीके से भी इसको शेप कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बॉल शेप में करना है, या पैटी जो साइड से थिक होती है, राउंड होती है, फ्लैट होती है, सॉरी, साइड से और ऊपर से फ्लैट होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको शेप्स कोई स्पेसिफिक रखनी है, जैसे मर्जी आप इसको शेप करो। Okay, so if we part boil them, okay, partially boil them, then it will be crunchiness or not? No, once you make the dough, then it will not be crunchy. It will be mixed nicely with the complete dough. So don't Can worry, we you will add, not feel that there is some white chana in there. Okay. Yes. yeah, can we add green chilies also for little spiciness? Yes, you can experiment with the flavors a little. You can add some spices also. We have added only cumin and salt in here. If you wish, you can add other spices also. So आप और भी spices इसमें add कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको salt और cumin पे ही stick करना है। कर सकते हो, that is your choice. Could you give a quick recap of the recipe? Okay. Quick recap. You have to take all the ingredients except the bread crumbs and put it in the mixer, blend it, add some amount of water if you have boiled it. Okay, there are two options. Either you can semi-boil it or you can soak it overnight. One of the two, not both. If you have soaked it overnight, don't boil it. If you're deciding to boil it, semi-boil it, then don't soak it overnight. Just wash it and keep it for the boil. So आपको फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है वो, या तो आप इसको ओवरनाइट सोक करोगे, लाइक वन नाइट पहले डिसाइड हो गया दैट यू हैव टू मेक दिस, सो ओवरनाइट सोक करके रख दो। सेकंड, इंस्टेंट डिसाइड हुआ, जस्ट इसको सेमी बॉईल कर दो। ओके, देन टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ ब्लेंडर and mix it. If you're boiling it, use some amount of the water which is left while boiling. And um, if you have pre-soaked it overnight, then use normal water. That's totally fine. ओके, सो मैंने यहाँ पे वाटर जो डाला है 3 बार डाला है, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। आई हैव एडेड वाटर थ्राइस इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। यू जस्ट टेक केयर व्हेन एवर यू रिक्वायर वाटर, व्हेन द ब्लेंडर इज गेटिंग स्टक अ लॉट, इट इज नॉट मूविंग, then only you will add water, but try till the end that it should work without water. So सब कुछ आपने मिक्स करना है ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, और आपको ट्राई करना है कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए विदाउट वाटर। बट अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तो आप वाटर ऐड करोगे। ट्राई करो पानी कम से कम डालो। ओके, देन वी हैव द डो हेयर इन द बोल, add breadcrumbs in this.
So breadcrumbs, I told you how to check how much breadcrumbs is required. So the same way you can add breadcrumbs. So breadcrumbs हम discuss कर चुके हैं. आपको कितने breadcrumbs चाहिए वो हम discuss कर चुके हैं. So accordingly आप इसमें breadcrumbs डाल के अपना proper dough ready करेंगे. Then we will shape into patties and we will deep fry or shallow fry it. Is it clear? Yes, participants, please reply. Is it clear now? We have a question. So what you have added is a typical Middle Eastern falafel. Yes, just not the water and breadcrumbs. I'm sorry. सिर्फ पानी और breadcrumbs नहीं डलते हैं, which is basically for the household because it's quite difficult to do with a house grinder to do it without the water. जो हमारे घर में grinders होते हैं, mixers होते हैं, उनकी इतनी power नहीं होती, तो इसलिए हमें पानी ऐड करना पड़ता है और उसको ओवरकम करने के लिए हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर रहे हैं. The one grinders mixer in restaurant, they are quite powerful with the quite powerful blades, so it is not done in the authentic way. So if you can avoid it, if you can avoid water, then you can skip the breadcrumbs also. अगर आप पानी avoid कर सकते हो, बिल्कुल पानी यूज नहीं कर रहे हो, तो breadcrumbs की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर कर रहे हो देन उसको बैलेंस आउट करने के लिए ब्रेड क्रम्स की जरूरत है. Am I clear? And okay, water we added. So it should be hot or cold? No, cold water, normal temperature. Okay. So I am shaping some patties here. Okay. So I'm shaping it like this. Make a round ball and just flatten it a little. मैं भी आपको दिखाती हूँ. तो थोड़ा सा हमने make a round ball and flatten. Okay. So ऐसे मैं यहाँ पे छोटी छोटी पैटीज बना के प्रिपेयर कर रही हूँ. Can you please shift the spotlight now? And we are going to fry it. Very gently, just add in hot oil. Wash your hands regularly while you are making the patties. आप अपने हाथ बार बार धोते रहिए जब आप पैटीज बना रहे हैं, क्योंकि जो बैटर है वो ऐसे हाथों पे स्टिक हो जाता है, और वॉश करेंगे तो उतनी अच्छी शेपिंग होगी. We have a question. So, ma'am, this falafel is served with hummus and pita breads. That's right. Yes, that's right. So, can we experiment doing them in air fryer? Yes, we can. Just apply the amount of oil generously when you are frying in air fryer. So जब आप एयर फ्रायर में ट्राई कर रहे हो, तो जो आपको ऑयल ब्रश करना है, दोनों साइड पे ऑयल ब्रश करोगे, थोड़ा वो अच्छे से करना. एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. So you have to do it on 180 or 200. They are quite delicate even after adding breadcrumbs, so just flip them over carefully.
Okay, so participant named Priya ji बोल रही है कि I love this falafel and hummus, but no one likes this taste at home, so I don't make it. Just for me, who is going to make twice, but all like we don't want. But now you know the recipe and that is quite easy. So I hope you will be making it at home now. And now the participant Rekha ji बोले my mouth is salivating. And okay, तो सवाल है कि हैंड पर ऑयल लगाकर भी बना सकते हैं क्या? Sorry, can you repeat the question, Pranali? Yes. हैंड पर ऑयल लगाकर भी बना सकते हैं क्या? ऑयल लगाओगे तो उससे और सॉफ्ट हो जाएगा. तो मैं आपको कहूंगी कि आपके हैंड्स प्रॉपर्ली ड्राई होने चाहिए जब आप इसको शेपिंग कर रहे हो. जस्ट रेगुलरली अपने हैंड वॉश करते रहो. Like you have made 4 or 5 patties, wash your hands. Again, make 4 or 5 patties, wash your hands. Because your hand needs to be quite clean. If they are not clean, they will keep sticking to your hands. So I will not recommend oil. This one is done. Okay, कल्पना जी पूछ रही है कि हमस जो है वो रेडीमेड मिलते हैं क्या? Hummus ready-made milti hai, yes. Otherwise, we are coming up with a Lebanese platter class very soon. Just keep looking it on Pankhuri app. Pankhuri app पे आप बने रहिए और देखते रहिए. हम बहुत जल्दी एक लेबनीज प्लेटर की क्लास के साथ भी आ रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे डिप्स कवर करेंगे और बाकी भी एलिमेंट्स कवर करेंगे जो एक लेबनीज प्लेटर में होते हैं. पार्टिसिपेंट्स आपके जो मास्टर क्लास नोट्स होते हैं पंखुड़ी एप्लीकेशन में उसमें सारे इंग्रेडिएंट लिस्टेड सारी प्रोसीजर है. Okay, so all the ingredient list along with the quantity and all procedure is present in your masterclass notes in the Pankhuri application. And yes, Pihu ji is also saying that ma'am मुझे भी खाना है and hummus recipe. बिल्कुल हम जल्दी आएंगे उसके साथ. सो आप सिर्फ हमस नहीं बाकी और बहुत सारी रेसिपीज आप वहां पे देख सकते हो. So we will keep the hot thing aside first. Let me do it first. Can you please shift the spotlight, Pranali? Please shift the spotlight, Pranali. Done. Thank you. And Bilkis ji बोल रही है nice ma'am, thank you for an amazing recipe as always. हमारे पास फिर से एक सवाल है कि ये hummus क्या है? Can you please explain ma'am? Hummus is basically a dip which is served along with this falafel, which is the traditional taste. Just a second, let me fix my camera properly. Yeah, and Bilkis ji बोल रही है hummus is so easy to make. The people who know it, it is quite easy for them, but who don't know it, it's not easy at all, Bilkis. Yeah, she's saying, ma'am, be careful, oil is hot. Yes, everything is done. Don't worry. Thank you so much for the concern. इसीलिए मैंने oil सबसे पहले side रख दिया ताकि कुछ गरम के साथ problem ना हो. Okay, so falafel is ready. I will just plate them. Till the time you have any questions, just let me know. Sure. Okay, so Bilkis ji boli it's a chickpea paste, and then Priya ji bhi boli yes, hummus is made with sesame seeds and chickpeas. Yes, that's correct. But there is a particular procedure, and we are going to make it with tahini. Okay, so we are going to make the traditional taste in the Lebanese platter of hummus and the actual way in which tahini is used.
तो जो हम हमस बनाएंगे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसमें थोड़े से मेहनत ज्यादा है। तो आप बने रहिए पंखुड़ी ऐप पे, और आपको हम पूरा लेबनीज प्लेटर बताएंगे बहुत जल्दी। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस डू वी हैव रिगार्डिंग दिस फलाफल? No questions. ओके, सो शैल आई डू द प्लेटिंग टिल द टाइम? कोई भी क्वेश्चंस है तो आप टाइपिंग कर देना, मैं फटाफट इसकी प्लेटिंग करती हूँ। ओके, प्रणाली आप स्पॉटलाइट ले लो प्लीज। Definitely. Yes, participants, please reply in the chat box. All are ready? Yes or no? आप सब तैयार है? Okay, we are getting requests for Kamal ma'am. Shawarma also, ma'am, you will teach. Okay, we are getting reply also. Yes, we are ready. Yes, participants, I will be definitely taking your questions as well. Yeah, we have a question. इसको कितनी देर पहले बनाकर रख सकते हैं? आप इसको लाइक मॉर्निंग में बना के रख सकते हो। यू कैन प्रिपेयर इट इन द मॉर्निंग, जस्ट शेप द पैटीज in the evening when your guests are arriving, and at that time you can just fry them, or if you want to shape them also before, you can do that also. So for good 6-7 hours you can prepare it in advance. And we got request for shawarma and Lebanese platter. Shawarma, I have class in this month only, so go and enroll for that right now when the class ends. And for Lebanese platter, we will surely come in upcoming months. Lebanese platter plan है, हम बहुत जल्दी उसके साथ आएंगे। और शॉर्मा और रैप्स की क्लास आज ही लाइव हुई है, आप जाओ पंखुरी ऐप पे चेक करो, उसमें भी हम सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हैं, तो जाके फटाफट एनरोल कर दो। Anything else we have? No questions. Okay. Just waiting for the plating. Just a question. मैम पानी नहीं छूटेगा इससे? पानी नहीं, वो मिक्स हो गया ना। While blending, it is mixed with the whole batter, and when we added the breadcrumbs, it is soaked by the breadcrumbs. So no, there is no risk of water in the hot oil. I hope this is your concern कि पानी गरम तेल में हम डाल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा। तो वो बैटर में मिक्स हो गया और ब्रेड क्रम्स ने पानी सोक कर लिया है, सो तेल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। No questions. Yes. So if you want to see the plating, Pranali. Yes. Okay. बिल्किस से बोलिए no if we keep before. In the fridge, if you prepare it in the morning and you have to keep it in the fridge, then just let it come to room temperature, make the patties by your hand, or if you have made the patties before, just wait for some minutes to release the condensation and then fry it. So, अगर आप इसको बना के फ्रिज में रखते हैं, अगर आपने पैटीज बना के रखी है तो थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, कंडेंसेशन पूरी निकलने दीजिए, या आप फ्रिज में जब रख रहे हैं रैप करके रखिए ताकि उसके ऊपर कंडेंसेशन ना आए। और अगर आप डो रख रहे हैं तो आप पैटीज बाद में बनाएंगे तो वो जो सारा वाटर होगा वो वाइल रोलिंग वाइल मेकिंग पैटीज एब्जॉर्ब हो जाएगा। Okay. बनाकर रखने के बाद इसे फ्रिज में रखना जरूरी तो नहीं है ना? जब आपने बना लिया, एक बार फ्राई कर लिया, आपको इमीडिएटली इसको सर्व करना है, अदरवाइज इसकी क्रिस्पीनेस निकल जाएगी। प्लीज शिफ्ट द स्पॉटलाइट ताकि मैं दिखा सकूं। Yes. Except shawarma set, is it a veg or non-veg? We are doing all veg, but we will discuss about the variation.
हम सब वेज ही करें, लेकिन इसके वेरिएशंस हम जरूर जानेंगे। I don't have hummus right now, but we are going to do it with tomato ketchup, some garnishing here. So this is ready. Just tell me, how does this look? ये अभी तैयार हो चुका है। पार्टिसिपेंट आप जल्दी से बता दीजिए कैसे दिख रहा है। ओके, बिल्किस जी पूरी फैलाफेल रैप। Sorry? Falafel wrap. Falafel wrap, yes, you can make out of this. In that class, shawarma class, you can check the module, Bilkis. फलाफल रैप हम कर रहे हैं कवर, एक बार जाके आप मॉड्यूल चेक कर लीजिए प्लीज। Okay, Manpreet ji बोल रही है it's looking yummy. Okay, and let me show you one piece here. Can you shift the spotlight? The top is very crunchy and inside it is very smooth and soft. It looks like this, but it is quite cooked from inside also. Okay, so it is meant to be like this. So ये ऐसा ही होता है. Don't think that it's raw or uncooked. It is meant to be like this, crunchy from outside and soft from inside, which just melts in your mouth. Okay. So we are also getting comments like it's like as always tempting and mouth watering. It's looking amazing and mouth watering. It's yummy. मुंह में पानी आ गया. Thank you so much. अब आप खुद बनाओ फटाफट and please share the pictures with us so that we can know your results also. And just serve it with different things, and you can experiment with this also. Add spices or other things you want to do. So just be creative, do something new, and keep trying the recipes. Thank you. The participant is requesting please eat it. Eat it. Okay, so let's have a bite. It is best when it is hot. इसका सबसे अच्छा स्वाद आता है जब ये गर्म होता है. इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है. It doesn't require tomato ketchup. It doesn't require hummus. You can just eat it just like that. If you have eaten falafel before, you know what my feelings are right now. So इसको ऐसे भी खा सकते हैं. Simply बहुत अच्छा लगता है. And अगर by chance ठंडे हो जाते हैं, just air fryer में या तवे पे इसको थोड़ी देर के लिए हीट अप कर लो. तवे पे और एयर फ्रायर पे गर्म करने से क्या होगा, क्रंचीनेस बनी रहेगी. इफ दिस गेट्स cool down, it's not warm or it's not hot, just warm it up on a hot tawa or in a air fryer and serve it hot because it tastes amazing when it is hot. Okay, so I'm going for another bite. They are saying yes, it is same like as we get outside, and they all also want to eat it. Go try this. No special ingredients are required. Go after this class in your kitchen, try it and do it as a snack in today's dinner. आज ही बनाओ, आज ही खाओ. ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोगों को मजा आ जाएगा. ओके, एंड खाने से पहले पिक्चर शेयर करना मत भूलना. डेफिनेटली पार्टिसिपेंट्स आपके पंखुड़ी एप्लीकेशन में
इस मास्टर क्लास में कोर्स ग्रुप का एक ऑप्शन आता है। कोर्स ग्रुप क्या है, हमारे बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है, सारे पार्टिसिपेंट्स है, हमारे ट्रेनर है, मैं भी हूँ। तो वहां पर एक ऑप्शन आता है शेयर करने का पिक्चर का, तो आप वहां पर शेयर कर लीजिए, आपको रिव्यू भी मिल जाएगा वहां पर। Yes. Okay, Bilkis board it tomorrow, ma'am, for sure. Just I will be waiting for all your pictures. Keep posting pictures in your Pankhuri app or in the group chat. आप लोगों की जो पर्सनल प्रोफाइल्स है यहाँ तो वहां पे शेयर कर लीजिए विद हैशटैग कुक विद कमल, या तो आप ग्रुप चैट में भी शेयर कर सकते हैं। Participants, you definitely can. तो आप अभी जल्दी से बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो participants, please let us know how was today's session. They are saying thank you. Yeah, they are saying thank you so much, trainer, and definitely thank you so much, trainer, for giving us amazing training, solving all the queries. Even you are like definitely you will be giving us the feedback of our pictures that we will be sharing in the pictures. Definitely हम सब pictures जो भी share करेंगे आपको हर एक picture पर feedback मिल जाएगा. And yes, sir, बहुत amazing. Thank you for the recipe. And very soon I am coming up with one more class which is about Mexican burritos. So do watch that also. Yes, participants, you can definitely check out the in the learn section of the Pankhuri application. You can check out all the sessions. And okay, it was nice, wonderful. It was easy, and ma'am bring best sessions and easy to make. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Okay. Thank you so much, participants, for the feedback. Thank you so much, trainer. And Thank you. yes. Yes. I hope I'm audible. Yes, Pranali, you are. Okay, okay. Thank you so much. Yes. So yeah, bye-bye everyone. Hope you enjoyed the session. आप जरूर try करिए, कोर्स ग्रुप पे पिक्चर्स भी शेयर कर देना. Bye everyone. And at the last, आपको बहुत पसंद आया आज का सेशन, तो आप क्या करिए, गूगल पे स्टोर में जाइए और हमारे एप्लीकेशन को जरूर रिव्यू कीजिए, रेट कीजिए. आप आई नो यू आर डेफिनेटली यूजिंग द एप्लीकेशन. कोर्स ग्रुप में भी आप बता दीजिए, अगर आप लाइव सेशन में नहीं आ पाए तो आपके पास क्या है, कोर्स ग्रुप है, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा. राइट, यू हैव द कोर्स ग्रुप. इफ यू वर नॉट एबल टू अटेंड दिस सेशन लाइव, don't worry, you have the course group. You can make the recipe, share the recipe, also share your feedback. Okay, वहां पर एक रेट रिव्यू का भी ऑप्शन आता है, वहां पर भी बता दीजिए. So bye bye everyone, thank you.